Hello friends, now we are going to discuss the types of budget in this session. Okay, two types of budgets are there. One is the balanced and second is the unbalanced. In unbalanced budget, it is divided into further two parts, that is the deficit and surplus budget. So let's talk about first of all balanced budget. Balanced budget के बारे में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. This means government planned its expenditure in such a way that those can just be made from the likely source of revenue. This deficit is identical situation in such a budget is impractical in real sense. पहले तो यही देखें कि भाई ये है क्या एग्जैक्टली. तो बजट जो है आप यूँ कह सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने अपना बजट नक्की किया है कि भाई एक्सपेंडिचर 500 रुपये है और 500 रुपये के अगेंस्ट में गवर्नमेंट अपना जो इनकम है वो भी 500 रुपये जनरेट करने में कैपेबल है या सक्सेस हो रही है. दैट टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड द बैलेंस बजट. मीन्स रेवेन्यू इज इक्विवेलेंट. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस्ड बजट की. ओके, तो बैलेंस बजट मतलब जितना आपने अपना खर्चा सोचा है उसी हिसाब से आपने इनकम भी जनरेट की है, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में ऐसा होता नहीं है. तो ये हाइपोथेटिकल बजट है. मेरिट्स क्या है इसके? बैलेंस बजट इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. In this type of budget, government avoid the wasteful expenditure to keep the expenditure equal to income. फालतू के खर्चे नहीं होते हैं कुछ भी. Since the government keeps expenditure in control to match the income, it does not have to impose additional taxes on the people to raise extra income to meet undue expenditure. Next, demerit. क्या क्या इसके जो है limitations हैं? Economic growth and welfare may be curtailed if government have strict expenditure and economic activity is economic activity is much to match the income. मतलब ये है कि सरकार जो है ग्रोथ एंड वेलफेयर उससे जो है थोड़े अफेक्ट होगी, क्योंकि जब आप अपने खर्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो तो आपको कहीं एडिशनल वे में एक्सपेंस करना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू. ओके, इफ गवर्नमेंट डू नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर एंड इट इज राइज taxes in order to increase income, match the excess expenditure, then people have to bear excessive tax burden. Adam Smith was in favor of the balanced budget, but James Keynes asserted that the case of balanced budget, government do not spend enough to maintain full employment. In other words, in order to maintain the full employment, government must incur more expenditure in economy if required. Fifth is your उसके बाद में unbalanced budget. The total expenditure and total income is such budget is not equal. यानी कि आपका क्या बोलते हैं रेवेन्यू या तो कम होगा उसके कंपेयर में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा. दूसरी कंडीशन के अंदर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी. तो ये दोनों की दोनों कंडीशन अनडिजायरेबल है, नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड बजट. तो पहले जो है हम लोग उसमें देखते हैं डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट का मतलब ये डेफिसिट का मतलब ये होता है घाटा, यानी खर्चा ज़्यादा इनकम कम, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दैट इज द डेफिसिट बजट. ठीक है, और सरप्लस बजट उसका अपोजिट, यानी इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम. ठीक है, ये दोनों के दोनों अनडिजायरेबल है, नहीं होने चाहिए. ठीक है, देखते हैं. चलिए, हम हमारे इंडिया में जो बजट होता है वो मोस्टली डेफिसिट बजट होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बजट होता है, घाटे का बजट बोलते हैं उसे. इन दिस टाइप ऑफ बजट द गवर्नमेंट एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन द एंटिसिपेटेड टोटल इनकम.
deficit budget equal to anticipated total expenditure is greater than anticipated total income, means expenditure is more than income. In present time, government budget are mostly deficit budget. Any economy which is developing usually spend more than income as expenditure on the development activities like education, social welfare, creation of the public utilities, etc. are higher. While owing the lower economic development, income from taxes and other sources are lower. In developed nations, expenditure or defense, research, etc. activities are higher, and even such countries can have the deficit budget. Surplus budget, a budget in one which government spend lesser than its anticipated income. It means income is more और expenditure पर सरकार कम खर्चा करती है. Okay. So anticipated expenditure is lesser than anticipated income. This means the government is collected more revenue from citizens by the way of taxes, and what it is spending for citizens, the overall development and welfare activities will lower in economy. Merit क्या है deficit budget के? This budget is known as the promote the development and welfare activities. The taxes burden upon people is lower in proportion of economic. तो deficit budget के अंदर लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन थोड़ा कम रहता है. ओके. Demerits क्या है इसका? Deficit in the budget also shows the government do not have control on expenditure. ये बताता है कि सरकार का खर्चों पे कंट्रोल नहीं है. In case of higher deficit, it can also conclude that tax revenue collected from public is going wasteful expenditure. ठीक है. अब surplus budget के merit क्या है? This budget is useful in time of the severe inflation, यानी महंगाई के टाइम पे. When the government spend lesser, employment, income and demand reduce and inflation can be restricted. There is no burden on borrowing in this budget. Demerit क्या है? If there is no inflation, then lower spending will result in lower investment, employment, income and production, which may lead the depression in the economy. ठीक है. अब इतना कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अकाउंट ऑफ अ बजट. ओके. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि जब आप बजट बनाते हो तो जिस तरह से आप जर्नल बनाते हो डेबिट क्रेडिट, तो ऐसे जो है अकाउंट में भी जो है आप इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है पार्ट बनाते हो. तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. देखो यहाँ पे in order to truly understand the concept of budget, it is necessary to get idea of the account of the budget by the rules of account. Every budget has two sides. One, the credit side where the revenue of the government is recorded, and the debit side where the expenditure of the government are recorded. Further classification on both the sides is under. पहला है on the credit side. There are the two accounts on the credit side: current income, okay, and capital income. Revenue income देखो, the direct and indirect taxes, profit of the public enterprises, fees, fine from the public utility, continue the revenue income. It is also called the current income. Capital income, these receipts are the transactions which have long-term continuous impact on government fund. Income generated by the government in the form of borrowing market, its own country, abroad, borrowing from the central bank, income from disinvestment are included in the capital income. डेबिट साइड में क्या क्या है ये तो सब जो है कहते हैं क्रेडिट साइड की बात की है, यानी इनकम की बात की. अब डेबिट में क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा. There are expenditure made in the current year on the salary of the government employee, interest payment, loan taken by the government, pension, subsidies, grant, current expenditure and defense. Capital expenditure देखो, these are the expenditure on the transaction which have long term continuous impact on government fund. This account include the loan given by the government in order to government repayment of the previously taken loan, capital expenditure on the social and economic, well as capital expense on defense. ओके. अब आप एक आइडियल बजट किसे बोलोगे? आदर्श बजट क्या होता है? तो ये बोल रहा है in India central government budget is presented by the finance minister of the Lok Sabha.
बराबर है। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डू यू नो दैट? बराबर है, मिसेस निर्मला सीतारमन इज द प्रेजेंट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत की इस समय वित्त मंत्री हैं। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट शी इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, अमेंडमेंट आर मेड लेटर, द बजट इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 to March 31 टू द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। ओके, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट को देखते हैं और यहाँ पे हम लोग हमारे लेसन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग आपकी बुक लेके बैठोगे तो पेज नंबर 110 में यहाँ पे लिखा हुआ है एन आइडिया ऑफ द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो इनकम, क्रेडिट में क्या क्या आएगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। दूसरे लेयर पे क्या आएगा, इनकम अदर देन टैक्स, इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम द लोन गिवन बाय द सेंट्रल अर्लियर पीरियड, प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, फीस एंड फाइन फ्रॉम द पब्लिक यूटिलिटीज, असिस्टेंस रिसीव्ड अब्रॉड। बराबर है। एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में देखोगे, बराबर है, डेबिट साइड में देखोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट, सोशल सर्विसेज लाइक एजुकेशन हेल्थ पे किया हुआ खर्चा, इकोनॉमिक सर्विसेज, नॉन प्लान ग्रांट असिस्टेंस, करंट एक्सपेंसेस, सब्सिडी, सैलरी, ये सब इसमें आएगा। ठीक है। फिर प्लान एक्सपेंडिचर जो कि प्लान के साथ में है, तो एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज पे, इरिगेशन पर, ठीक है, इस तरह से। फिर कैपिटल अकाउंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बजट में देखो इनकम, क्रेडिट कहाँ से, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, ये सब चीज़ें, और एक्सपेंडिचर में रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन टू द अनदर गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें। ओके, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का था। अब इसके बाद में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बजट में क्या है, लोकल बॉडी के बजट में क्या है और पंचायत के बजट में क्या है, उसके बारे में अगले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।